जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट برطانیہ जोन ने برطانیہ में आबाद नौजवान कश्मीरियों की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के मसले को नई नस्ल में मुंतकिल करना और मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक कश्मीरियों की कौमी आज़ादी के मकसद को उजागर करना था। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी नौजवानों को एक प्लेटफार्म फ्राहम किया जहाँ वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें और अपने हकूक़ के लिए जदोजहद कर सकें। नाटंघम से हमारे नुमाइंदा और डायरेक्टर पब्लिक अफेयर ख्वाजा कबीर अहमद से मौसूला तफसीलात के मुताबिक बरतानिया में बसने वाले कश्मीरी नौजवानों को इस कॉन्फ्रेंस ने एक नई राह दिखाई है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ, जिनमें कश्मीर की तारीख़ी अहमियत, मौजूदा सियासी हालात और मुस्तकबिल के चैलेंजेस शामिल थे। मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि नई नस्ल को अपने विरसे और कौमी शनाख्त के बारे में आगाही हासिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बेहतर तौर पर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। कॉन्फ्रेंस में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी तजावीज़ पेश की। शुरा ने कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर किया। सोशल मीडिया के इस्तेमाल, बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ राब्ते और मुख्तलिफ ममालिक में कश्मीरी कम्यूनिटी के साथ तावन करने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर बात की गई। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया जोन के रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों की शिरकत के बगैर कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने नौजवानों को तहरीक दिलाई कि वो अपने हकूक़ के लिए खड़े हों और आलमी बरादरी को कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करें। उम्मीद की जा रही है कि ये कॉन्फ्रेंस बरतानिया में मुकीम कश्मीरी नौजवानों के लिए एक अहम कदम साबित होगी। इससे न सिर्फ नौजवानों में शऊर बेदार हुआ बल्कि इन्हें एक नई उमंग और जज्बा मिला कि वो अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करें। तवक्को है कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में कश्मीरी नौजवान अपने हकूक़ के हसूल के लिए मज़ीद मजबूती और अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे और आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को उजागर करेंगे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया जोन की इस काविश ने नौजवान कश्मीरियों को एक प्लेटफार्म फ्राहम किया है जहां वो न सिर्फ अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं बल्कि अपने विरसे और कौमी शनाख्त को भी महफूज कर सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस कश्मीरी नौजवानों की जदोजहद का नया आगाज़ साबित होगी। हमारी कौमी तशक्कुस जो है वो इस टाइम जो है बिल्कुल दाव पे लगा हुआ है कि अगर हम लोग खुद ही अपने लिए एफर्ट नहीं करेंगे तो बिल्कुल हम मिट जाएंगे इस तारीख से। We need to highlight the importance of how many young people and young Kashmiris are important to continue the freedom struggle. We play a major role in social, political, cultural and economic life in the UK. Jammu Kashmir does not only have Islam in there, there's so many different religions, there's so many different dialects, there's so many different cultures, and yet no one knows. It's so important we come forward and accept our identity for who they are and allow them ourselves to learn, contribute to providing Kashmiris the right to self-determination. सबसे बड़ा मसला है वो हमारा शनाख्त का मसला है। इनसे हम ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो, बुरहान वानी पैदा हो, मकबूल बट शहीद पैदा हो, लेकिन हम लोगों ने कोशिश नहीं की कि हम उसको अपने घर में पैदा करें, हम अपने बच्चे को मकबूल बट शहीद बनाएं। क्यों? अगर हमने अपने बच्चे को मकबूल बट शहीद बना दिया तो वो कश्मीर की बात करेगा, वो कश्मीर के लिए लड़ेगा, तो फांसी की तख्ते पर लटक जाएगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि दूसरे का बेटा जो है वो मकबूल बट बन जाए, शायद कश्मीर का मसला उससे हल हो जाए। यूथ कॉन्फ्रेंस एक अलग की तरफ से जो है ना मुनक़िद हुआ और ये एक अच्छा अज़म है कि वो अपने नई जनरेशन को एक मुस्बित और एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ उसको हवाला करने जा रहे हैं। We have had this beautiful chance to learn more about Jammu Kashmir and to learn this information and spread it on in the future. I would like to politely ask my youth to speak up for all of the voiceless and innocent people suffering and being martyred in Kashmir, as they have been speaking for in Palestine. The biggest happiness I have here is we're here for a joint agenda of helping our identity going forward. Now this starts from the youth growing up. So the first thing we deal with as patients is identifying what the problem is. And the first problem, which the sisters and brothers have rightly mentioned, is defining yourself as Kashmiri. We should be proud of our heritage and we should not be shy to admit that we are Kashmiri. It's our duty, our role to stand forward and demand the right for the Kashmiri people. There is no strength, determination and compassion like our youth. We could do it in a smaller group. There is a bigger plan to happen for this to work in Kashmir. We work with campaigns up and down the UK or in different countries.
Every campaign I meet with Palestinians, with the black rights activists, with people from Sudan, people from Singapore that are fighting for their rights, they talk about settler colonialism and capitalism. When they hear about Kashmir, they want to help, but unfortunately we're not doing enough. So I say to the youth, step it up and start working towards it. Build something that people can join you. You'd be surprised how many allies we get, inshallah. I think not a lot of people are aware of the problems that are going on in Kashmir. We should be raising more social awareness, and we should be making sure more people know about this. There are very serious problems going on, and I think we all have a way of fixing it if we all come together and raise awareness. For the UK government, it is not just a moral issue. It is not just something that they are morally obligated to do. It is a legal obligation. The UK government is party to the dispute through Lord Mountbatten, as was spoken earlier by Singh also. And so therefore the obligation on them is not just one of resolving an issue where there is grave human rights violation, but there is a legal obligation on them because they are party to the dispute. Why have we lost our identity? One question that springs to mind, why have we lost our identity? The reason that we, and I firmly believe we have lost our identity because of the malice individuals that our non-state actors employ to be in and around and amongst us to dilute our Kashmir issue and to misguide our future generations. If every single one of us do not take our responsibilities for the issue of Kashmir up today, the Kashmir issue will fail. So I plead to every single one of you, when you get into your homes, push the Kashmir issue and educate our youngsters about what is Kashmir. We must get organized. We must stand with one another. Right now, we must break away from the shackles of our oppressors. But what I will say that we are in a state of war. I am a firm believer as a Kashmiri, as a humanitarian loving individuals, we are in a state of war. And I will leave you with one thing, and I hope you will ponder with it. Freedoms I never asked for. Freedoms are always taken by force. मेरे देश की गलियों में नई सुबह फूटेगी, कश्मीर वतन मेरा, कश्मीर चमन मेरा, ये देश हमारा है, इन्हें आंखों का तारा है. Kashmir is my motherland, Kashmir is my homeland. There is no illegal thing, there is no illegitimate thing when somebody asks you and you introduce yourself as a Kashmiri. This country, this society gives you the right, the identity. You can identify yourself as a Kashmiri. There is nothing illegal. The first thing which I request you, please, whenever you interact with the community, you introduce yourself as a Kashmiri. And I am doing myself, and I get very much respect when I introduce myself as a Kashmiri. चाहे गिलगित के पहाड़ों की बात हो, आजाद कश्मीर में बसने वाले लोगों की बात हो, वादी की बात हो, थर्ड जनरेशन भी यहाँ पे बैठी है और सोशल मीडिया के डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेशनली इस मामले को लेके चले. उम्मीद है कि इस तरह की जो यूथ की कॉन्फ्रेंसेस जब इंटेलिजेंट शिया सब बैठेंगे तो जब हम इन कश्मीर के इस मसले को लेके तमाम इकाइयों के लोगों को हम आगे बढ़ेंगे तो यकीनन एक मसले का हल भी होगा. We need all these parts of Kashmir to come together because we have now been separated by 7 decades of history. Our trajectories, our thoughts, our influences are very different from each other. So we have to come together on one common agenda, one common goal. And that will only happen when we voice our grievances, we talk to each other, we understand what the problems are and how we can move forward together. First thing you have to do is to educate, organize and agitate. So educate yourself first on what is the issue. What is the issue from all sides of Kashmir? What is happening right now in your part of Kashmir and the other parts of Kashmir? And after you educate yourself on that, organize yourself. Build societies in your universities and talk about Kashmir over there. So first you educate, you organize and then you agitate. It will at least push the ball further in creating more awareness. We've had multiple discussions, multiple talks where people come and stand for it, but not enough action has been taken. But UN reporting, but not acting. So it's very, very important today
day that I learned that we need to act, we need to do more, we need to involve Parliament, we need to involve our international organisations and get them involved with people who are educated in the UK, with more influence to take action. मुझे इस प्रोग्राम में आके पता चला कि हमारी जो स्ट्रगल थी सोशल मीडिया के जरिए हमारी जैसी अप्रोच थी तो वो उस कहीं ना कहीं से उसका हमें जो है ना फल मिल गया है आज went very well. I'd like to thank those that attended. I think the website's a brilliant idea. I think it'll help the masses get to know more about the Kashmir agenda that's put forward. आज बहुत मज़ेदार इवेंट हुआ है सारे हम कम्युनिटी के साथ आए और हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी अपने कश्मीर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह, बहुत लोग आए और दूसरा हमने अपने जो बड़े हैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया हमारी जनरेशन के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए, एक तरह से हमारे लिए एक फाउंडेशन बनाई है जिसके ऊपर हम आगे बिल्डअप कर सकते हैं। फ्रूटफुल साबित हुआ इंशाल्लाह। ये एक हाल है कि यहाँ पे ना एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से फंक्शन था लेकिन बगैर किसी नारे के बगैर किसी झंडे के फंक्शन किया गया है और सिर्फ इसलिए गया है कश्मीरी यूथ को जो है यूनाइट किया जाए और मसला कश्मीर जो है ना मुख्तलिफ शोबों में जाकर उजागर किया जाए। बहुत अच्छा था and I'd like to thank our elders for taking time to come here and teach us about this important issue about Kashmir and I hope that moving forward we can carry on and we can do more conferences like these so we can teach our further generations as well. आज का जो कश्मीरी डायस्पोरा में यंगस्टर है वो न सिर्फ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सोसाइटी में बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस मसला कश्मीर के साथ इंगेज करें। यूथ ग्रुप का बुनियाद रखी जाएगी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या हमारा जो कश्मीरी डायस्पोरा यूथ है उनके साथ कंटेक्ट बिल्ड करके एक यूनिफॉर्म किस्म की अटेम्प्ट होगी कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो मसाइल के हवाले से तहरीकें हैं या जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक उसका वो अपना कंट्रीब्यूट की बहुत एक अहम ज़रूरत थी। इससे काफ़ी सारे नौजवान हैं जो आपस में कनेक्ट कर पाए, मुख्तलिफ खित्तों से, वादी से लोग आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से थे जिन्होंने आपस में मिले हैं और यूथ ने काफ़ी सारे सवालात रखे थे जिसके बारे में उन्हें अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों की और बहुत कुछ सीखने को मिला और इंशाल्लाह ये जो अब एक नई नस्ल में जो पूरी तहरीक ट्रांसफ़र हो रही है उसका ये पहला कदम बहुत अच्छा साबित हुआ है। बरतानिया में जम्मू कश्मीर यूथ फोरम एक बनाने का ऐलान किया है जो नौजवानों को अमन है उनके हवाले किया है। अकाबरीन ने जो इस लंबी स्ट्रगल की थी और ये आज हम कन्वर्ट करने की तरफ जा रहे हैं कि आने वाली जो यूथ है वो इसको अब